चलो, we will take the tutorial number 3. So based on beta and gamma function only. So we'll solve 5 sums based on the beta and gamma function. Wait for 2 minutes. So I'll share the link with everyone. You can also share the link with everyone. Within a 2 minutes, we'll start the lecture. Okay? Just share the link with the others, so they will also join the lecture. This lecture is very easy. Simple sums. If you follow the formula, you'll get the answer very easy. So share the link with the others, so everyone can join. You can also join, share the link. So within 1 minute, we'll start the lecture. Okay. So today we'll complete tutorial number 3. Simple. So there are 5 sums based on the tutorial number 3. There are 3 methods. On one method, 2 sum. Second method, 2 sum, and the last method, only 1 sum. Okay. Sure. So let's start with the lecture. First of all, I revise what is the gamma function with the formula. Then we'll start with the actual sum. So let's see what is the gamma function first. So last time we देखा था what is the gamma function. एक बार फिर से देख लेते हैं what is the gamma function. Sure. So let's start. So last time हमने gamma function start किया था. So what is the gamma function? Formula क्या था? That is the integration from 0 to infinity e raised to minus t raised to n dt is equal to house of n plus 1. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हमने देखा था और इसके ऊपर तुमने 4 to 5 सम सॉल्व भी किए थे. So e raised to minus t raised to n dt is equal to n plus 1 in the house, which is also equal to n factorial. कैसे? n plus 1 है ना, तो just reduce to 1. मतलब यहाँ पे अगर house 5 होगा, so you can write 4 factorial. एक से reduce करो. Okay? तो यहाँ पे फंक्शन कुछ भी आ सकता है, whether it is a t, whether it is u, whether it is x, whether it is y, whether it is theta, anything. So आज जो सम्स करने वाले फर्स्ट मेथड में, that sum is based on this formula. It's a corollary. So the formula is इसका ही new formula. The basic formula is this one only. इसका conversion करके there is one more formula. The formula is integration 0 to 1 x raised to n log x raised to n dx is equal to minus 1 raised to n plus 1 raised to n plus 1 house n plus 1. ठीक है, एक्स्ट्रा क्या गया वहां पे? दिस वन इज द सेम. व्हिच वन? ये तो सेम ही, ये एज इट इज कॉपी हो गया. x raised to n, ओके, log x raised to n. तो ये फॉर्म में क्वेश्चन होगा. तो लास्ट टाइम ये फॉर्म में क्वेश्चन था ना, तो डायरेक्टली आंसर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा by using putting some values, late something. तो अगर ये फॉर्म में क्वेश्चन होगा, तो you can directly write down the answer, but we'll follow the step. We'll follow step by step. So because if you write this answer directly, you will get just 1 and 2 mark. So we'll follow the method like late putting something, assuming something, इसे put करेंगे, then solve this. Else cross check करना, you can directly use this one. So x raised to n log x raised to n. तो यहाँ पे क्या होगा? minus 1 raised to n. तो यहाँ पे जो n है, same as it is copy करो. And m plus 1, which one is n? M is here. You can just write m plus 1 and n plus 1. And this is as it is. To cross check the answer, we'll use this one. Directly we need. To cross check the answer, we'll use this one. Okay, sure. So let's start with the first one. So the basic formula of the gamma function is this one. यही formula use करेंगे. Question कौन सा form में हमने? Question ये form में. So we'll convert this question into this form. Okay. तो जो आंसर आने वाला है, ये same आने वाला है. But we can't
सॉल्व डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, लेकिन वो 2 स्टेप में आंसर आ जाए, दैट इज नॉट फुल मार्क्स आपको मिलेगा। सो व्हाट विल डू, जो से मैंने पिंक में लिखा है, विल कन्वर्ट दिस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इनटू नॉर्मल फॉर्म, विल फाइंड द आंसर एंड दिस आंसर विल बी सेम एज दिस। ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट वन, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। So let's start with the first one. So question 1, okay, we'll start with the question 1. Sure. So first I'll write the question so you get a clear idea. This is what question is 0 to 1, integration of 0 to 1 x cube bracket log 1 by x raised to 4 dx. ठीक है, ये फॉर्म है क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे बाद में, विल यूज दैट फॉर्मूला एंड क्रॉस चेक करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। चलो व्हाट विल डू, विल अज्यूम समथिंग, सो लेट, ये फॉर्म क्वेश्चन में कैसे करना है, लेट log 1 by x is equal to t. So we'll assume something, no? We'll assume this log 1 by x is equal to t. We'll assume something, okay, log 1 by x is equal to t. ऐसे assume करो, and then we'll get the final answer. So step by step follow करेंगे, then so we'll assume this log 1 by x, okay, यहाँ पे log 1 by x है ना, we'll assume log 1 by x is equal to t. तो अगर मैंने इसको सेपरेट किया, see log a by b कैसे होता है, log a minus log b, ऐसे होता है ना, तो it's a 1 by x, that means this term is a and this term is b. So how can I write, मैं लिख सकता हूँ log 1 minus log x is equal to t. Yes, log 1 is how much, 0, log 1 is 0, so I can write minus log x is equal to t. तो finally मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write log x is equal to minus t. ठीक है, यहाँ तक पता चला, ये तो फॉर्मूला इसका। Then differentiate on both sides and do the differentiation on both sides. तो अगर मैंने differentiation on both sides किया, यहाँ पे लिखता हूँ differentiation on both sides, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, okay? तो अगर मैंने differentiation किया on both sides, तो मुझे क्या मिलेगा, this method is the same for every sum. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, because to convert the given question into actual gamma function, nearest to form. So on both sides differentiate करने के बाद it will become 1 by x dx. Or what we'll do, just wait, what we'll do, we'll convert this one into e raised to a. We'll do one more step, the log x is equal to minus 10, इसको convert करते e raised to 4, तो ये x as it is, it will become e raised to minus 10, समझा? So x as it is, और यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसको e raised to फॉर्म में कन्वर्ट करें, e raised to something, x as it is, यहाँ पे इसको e raised to फॉर्म में कन्वर्ट करें. Now differentiate on both sides. If I do differentiation on both sides, so differentiate on both sides. The first one एक बार देख लो, so you get idea. What is the differentiation of x? 1, यहाँ पे dx आएगा, e raised to minus t का, that is a minus e raised to minus t, because यहाँ पे minus t and dt. So in the question we'll replace dx as minus e raised to minus t dt. ऐसे replace करेंगे. I'll go through the chat box after the question. तो dx is equal to minus e raised to t dt. Okay. उसके बाद we have limits from 0 to 1. So when x is equal to 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, ठीक, देखो यहाँ पे अगर मैंने log 0 पुट किया, तो log 0 is itself 0, so t is also 0. That means t is also 0. ठीक है, in this equation you can put x is equal to 0. Second, अगर मैंने put किया कि when x is equal to next is a 1 ना, तो मैंने यहाँ पे put किया तो log x is this x is equal to 1. ठीक है, so just wait, sorry, log 0 is infinity, ये पकड़ के log 0 is infinity, log 0 is infinity, so t become infinity. Then x is equal to 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो it will become t is 0, because the value of log 1 is 0. So limit कैसे change हुआ, it will from 0 to 1 ना, तो 0 to 1 कैसे replace हुआ, it become infinity to 0. So let's solve it. So अगर कैल्शियम आपने देखा log 0, it shows a math error, that means infinity.
because we can't find the logs there. So when the answer is 0, it's become infinity, and it's 1, it becomes 0. ठीक है, no idea, no any doubt, in doubt, कुछ भी doubt है, no one. So we'll substitute. क्या क्या substitute करेंगे? We'll substitute x cube. X क्या है? E raised to minus t. Then we substitute dx. Then we substitute log x. Okay, so we'll substitute all the points. यहाँ तक देख लो, and then we go to the next step. Next section. So this pattern is same for everyone. ये pattern सबको follow करें. This pattern. Sure. So this pattern is a common for every sum. यहाँ पे log 1 by x है तो log 1 by x, log x है तो log x. ठीक है? Sure. Now we substitute the few part. So let's substitute. पहले मैं यहाँ पे substitute करता हूँ, then I copy it. See, integration क्या होगा? 0 become infinity and 1 becomes 0. चलिए, no problem. Then this way. ठीक है, ये infinity 0 because 0 become infinity and 1 becomes 0. उसके बाद x cube ना, what is x? E raised to minus t. E raised to minus t का cube ना. And copy the on the same. यहाँ पे copy करूँगा. Just write it. Log 1 by x raised to 4 ना. So what is log 1 by x? It's a t. So t raised to 4. What is the dx? It's a minus e raised to minus t dt. Okay, I'll write down the exact question. The exact question यहाँ पे लिखता हूँ. Then you do the modification. So it's 0. It's a infinity to 0. E raised to minus t का cube. T raised to 4 into minus of e raised to minus t dt. ठीक है, ये होगा question. Let's solve it. इसको थोड़ा modify करेंगे. You will get the final answer. So let's modify this one. So ये reverse करेंगे. Infinity ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. Because upper is always bigger and the lower is also 0. It's lower is smaller. 0 to infinity लिखेंगे actual one. You are e raised to minus 3t. You are t raised to 4. ये minus से बाहर लेके जाते हैं. It's a minus 1, minus, and it's e raised to minus 2. ठीक? और थोड़ा modify करते हैं. So I can write this one as minus 0 to infinity e raised to minus 3t. See, e raised to a and e raised to b. Basis से I can get a plus b. तो आपको minus 3t minus t. तो क्या होगा? E raised to minus 4t into t raised to 4 dt. ठीक है? आ गया सबको आंसर यहाँ तक. उसके बाद now actual formula क्या था? What is your actual formula? The formula is 0 to infinity e raised to minus t raised to n dt. t raised to n है क्या? Yes. dt है क्या? Yes. 0 to infinity. Yes. लेकिन यहाँ पे minus t इतना ही आना चाहिए. यहाँ पे कितना है? minus 4t. So again we'll do the resubstitution. क्यों? Because ये form में आना चाहिए. e raised to minus t as it is आना चाहिए. यहाँ पे minus 4t. So we'll do the substitution again. We'll do the substitution again. So what I'll do? We'll resubstitute it. Let's resubstitute. What will do? Assume something. So what will do? We'll assume let 4t is equal to e. Because ये minus आना ही चाहिए. ये 4t के जगह पे एक ही function आना चाहिए. So let's 4t is equal to u. If I differentiate on both sides, क्या होगा? It's a 4 dt is equal to du. So what is a dt? dt is a du upon 4. Just do the substitution. क्या होगा changes? But बाकी limit is same because यहाँ पे it's just linear form. 0 की जगह पे 0 infinity infinity. So minus 0 to infinity e raised to minus 4t ना. What is 4t is u. So e raised to minus u t raised to 4 ना. So what is t? T is u by 4 ना. So u by 4 raised to 4. And what is a dt? dt is a du by 4. Okay, we'll write the same equation. यहाँ पे फिर से तो दो बार substitution किया. First one is a log 1 by x is equal to t. The second substitution is
4t is equal to u. ये क्यों किया? Because we require यहाँ पे only one function, that is minus u. Okay, that's all. So यहाँ पे कुछ भी डाउट है? So we'll solve this one. थोड़ा modify करेंगे and then solve. Okay, I'll write down this equation once again. We'll cross check the answer with a shortcut. You can examine full because 4 to 5 marks square, so we should follow this whole step. Chalo. So let's solve it. So minus 0 to infinity, u raised to minus u, it's u raised to 4 divided by 4 raised to 4 into 4. So 4 raised to 4 and 4 raised to, यहाँ पे 1, it becomes 4 raised to 5. Minus 0 to infinity, it's a constant, 1 upon 4 raised to 5. It's e raised to minus u and u raised to 4 d. It's as per the gamma function. So right, by gamma function, what is the gamma function? It is 0 to infinity raised to minus t into t raised to n dt is equal to house of n plus 1. So if I use this formula, so मैंने ये formula use किया. What is your answer? The minus 1 upon 4 pi as it is. Okay. Then something is missing. Which is missing to name. Let me check. Just a moment. So we'll check this one. यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी था और यहाँ पे 0 था ना, सो हमने कन्वर्ट किया इन्फिनिटी ऊपर और 0 नीचे, तो दैट व्हाट विल हैपन, ये माइनस इरेज होगा. इन्फिनिटी टू 0 ऐसे था ना, व्हेन यू कन्वर्ट दिस वन टू इन्फिनिटी टू 0, तो यहाँ पे माइनस आएगा. तो पहले से तो माइनस था, तो माइनस में माइनस प्लस होगा. मींस व्हेन यू डू द इन्फिनिटी टू 0, जो भी साइन यहाँ पे होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा. दिस माइनस विल रिड्यूस. दैट वाज अ मिस्टेक, सॉरी. बिकॉज़ नीचे इन्फिनिटी टू 0 था, तो हमने कन्वर्ट किया. तो 0 टू इन्फिनिटी किया, तो साइन गेट अपोजिट, यहाँ पे माइनस गेट कैंसिल. व्हाट इज आंसर? सी e raised to minus t. देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, n is 4. So what I will do? The house of pi. And what is house of pi? That means a 4 factorial. So it's a 4 factorial divided by 4 raised to pi. You just use a calci, you will get the answer. So calci पे just solve it. 4 factorial divided by 4 raised to 4. So answer is 3 by 128. तो सबको आंसर आ गया. So 3 by 128. खत्म. So you get the answer as 3 by 128. So if you use the shortcut also, you will get the same answer. 3 by 120. Okay. एक बार बता दो कैसे shortcut करना है. So you can follow the shortcut once again. This is 3 by 120. Okay. So we'll do the shortcut also. कैसे करते हैं shortcut से? What is the question? So question था, it is 0 to 1 x cube log 1 by x raised to 4. ऐसे था. And what is your question? Question tha 0. What is your shortcut method? X raised to n and log x raised to n dx. That answer is minus 1 raised to n divided by n plus 1 raised to n plus 1 and house of n plus 1. चलो solve करते हैं इसमें. Minus 1 raised to n. What is n? तो यहाँ पे n is equal to 4. And what is n? n is equal to 3. So minus 1 raised to 4 मतलब it's a positive only. Minus 1 raised to 4 ऐसे में कर लो. n plus 1 मतलब ये 4, n plus 1 मतलब 5. And यहाँ पे house of n plus 1 मतलब 5. So this answer is positive 1. And 5 factors of 4, 5 house is 4 factorial upon 4 raised to 5. ये तो है मुझे आंसर 3 by 120. लेकिन कितने स्टेप में है? 2 स्टेप में आंसर आ गया.
So those simply you not get 4 marks. So you should follow that equation. Let put something, then we get the answer. Then again आपको substitute करना in the u form. X to t, t to u. Then only you get the answer. You can do the cross check also. So let's एक sum हो गया. Let's see the second sum. Second is थोड़ा difficult है. Let's go for the second one. Second equation is integration 0 to 1 dx divided by x log 1 by x. Okay. So again we will substitute. So let log 1 by x is equal to t. So what will happen? It's a log 1 minus log x is equal to t. So it's a minus log x is equal to t. So log x is equal to minus 2. So if I differentiate यहाँ पे x raised to e raised to minus t. ठीक है, यहाँ तक. Now if I do the differentiate on both sides, so अगर मैंने differentiate किया on both sides तो क्या होगा? It's a dx is equal to minus e raised to minus t dt. ठीक है. Now we'll do the substitution. तो question क्या चीज होंगे in the question and ये पे लिखना when. So when x is equal to 0, the log 0 it will become infinity. Okay, so t become infinity. And when x is equal to 1, t क्या होगा? T will become 0 because log 1 is 0. So what is your answer? It will become infinity to 0 because यहाँ पे 0 is infinity and 1 is 0. And dx की जगह पे क्या है? Minus e raised to minus t dt divided by square root of what is x? E raised to minus t. What is log 1 by x? It's a t. Okay, so we'll write this one again and थोड़ा format change करो. E raised to minus t raised to 1 by 2 e raised to 1 by 2. Okay, then this one. Now यहाँ पे infinity to 0 है ना, तो मुझे क्या लिखना है? Infinity ऊपर लेके जाना है, 0 नीचे. तो what will do? तो अगर मैंने इसको convert किया तो और एक minus sign आएगा. Introduce one more minus sign. मैंने last time भी बोला था क्या कि when you have infinity to 0 और मुझे convert करना है 0 to infinity, there is a minus sign extra add. ये minus sign और ये minus sign तो बिल्कुल positive करेंगे हम. यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होगा. So let's go for the next one. तो ये फिर से लिखता हूँ. So infinity to 0 is to minus t dt divided by this to minus t dt. ठीक है. चलो now अब क्या करना है? इसको 0 to infinity करना है ना. यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो. माइनस साइन ये माइनस और उसका खुद का माइनस इट विल बिकम पॉजिटिव. व्हाट इज आंसर? नाउ इट्स e raised to minus t dt divided by square root of e raised to minus t. माइनस साइन कहाँ पे गया? दिस माइनस और ये कन्वर्जन का माइनस, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. ठीक. चलो नाउ व्हाट विल डू? इसको थोड़ा मॉडिफाई कैसे? 0 to infinity e raised to minus t. ठीक है. नाउ देखो 1 upon square root of x, इसको मुझे ऊपर लिखना है तो कैसे होगा? So 1 upon x raised to half, square root मतलब हाफ ना, ऊपर जाने के बाद x raised to minus half ऐसे होगा. तो सेम फॉर्मूला ने यूज किया तो e raised to minus t raised to minus half, t raised to minus half into t. क्या किया? 1 upon root x ऐसे होगा तो क्या होगा? 1 upon x raised to half and न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो it will become x raised to minus half. तो सेम e raised to minus 2 नीचे in the square root, ऊपर गया तो माइनस हाफ, टी भी नीचे तो माइनस हाफ. इतना तो आना चाहिए. नहीं तो सीख लो जैसे मैंने किया अभी सेम नेक्स्ट टाइम फॉलो करो. ना थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं. क्या होगा? 0 to infinity e raised to minus t, तो माइनस t into हाफ, so e raised to a and raised to b. ये क्या होता है? e raised to a into b. If I follow same method तो क्या होगा? e raised to माइनस एंड माइनस प्लस होगा t by हाफ, t by 2. यहाँ पे क्या होगा? t raised to minus 1 by 2 dt. तो e raised to फॉर्म ऐड करते हैं माइनस t and t by 2.
माइनस टी प्लस टी बाई टू क्या होगा, इट्स अ माइनस टी बाई टू, माइनस वन प्लस हाफ, इट्स अ माइनस हाफ ना सी, सो माइनस टी प्लस टी बाई टू, इट्स अ माइनस टी बाई टू, सो e raised to minus t by 2, e raised to minus t by 2 dt। यहाँ पे तो e raised to minus t चाहिए, 1 by 2 भी नहीं चाहिए, 1 by 2 भी रिड्यूस करना है, तो अगेन एजम्पशन करना है, सो विल एज्यूम लेट t by 2 is equal to u। Why not minus? Because जो gamma फंक्शन वहाँ पे माइनस होता है, so do not substitute minus t by 2, just यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ग्रेड t by 2 is equal to u। okay, so what is the t is equal to 2, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड, it will become dt is equal to 2d। okay, and we'll do the same modification in the question, ये क्वेश्चन में सेम ये सेम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, so I'll do the modification here। You can cross check the answer with a shortcut also। okay, in order to convert 0 into infinity, it's a linear form ना, पहले कैसा था, linear नहीं था, logarithm form, so that's why लिमिट चेंज किया, तो यहाँ पे t अगर 0 होगा तो u भी 0 होगा, t अगर infinity तो u भी infinity, so no need to change it, it's 0 to infinity only, e raised to t by 2 is u only, it's a minus u, and t raised to minus half, no, so t is what, 2u, so 2u raised to minus half, and what is a dt, dt is a 2d। ठीक है, बाकी सब मिलेस करते हैं। दो तीन बार प्रैक्टिस करो, ये प्रॉपर बैठेगा, तो एक बार हाथ बैठ गया तो कुछ भी नहीं इसमें, और ये सेमेस्टर 2 का टॉपिक। ओके, सो वी आर रनिंग इन द सेमेस्टर 4, राइट नाउ इन सेमेस्टर 4, तो इजी आना चाहिए। तो e raised to minus u, तो ये माइनस 1 by 2 है ना, तो 2 raised to minus 1 by 2, u raised to minus 1 by 2 to d। ठीक है, नाउ जस्ट सी 2 raised to minus 1 by 2, और यहाँ पे 2 है मतलब raised to 1, so 2 raised to minus half plus 1 मतलब 2 raised to minus half, इसको साइड में 2 raised to minus half, 0 to infinity u raised to minus u, u raised to minus half d। ठीक है, 2 raised to minus half मतलब क्या होगा, so नीचे गया तो पॉजिटिव होगा, एंड हाफ मतलब स्क्वायर रूट, इससे रूट 2, तो इसको विल राइट रूट। हमने कैसे किया, ये दोनों का एडिशन बिकम माइनस हाफ, माइनस मतलब नीचे गया तो पॉजिटिव होगा, एंड हाफ मतलब इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ इट्स अ गामा फंक्शन, तो नेक्स्ट टाइम राइट 1 upon root 2, now it's a gamma function only, so I do it by gamma function, so by gamma function, so what is a gamma function, 0 to infinity e raised to minus t, t raised to n dt is equal to c। यहाँ पे u है, यहाँ पे t, इसका कुछ मैटर नहीं होगा, वेरिएबल चेंज हो सकता है, ये हाउस n plus 1, if I use the same method ना, मैंने यहाँ पे सेम लिखा, so what is your answer c, इसको 1 upon root 2 लिखता हूँ, मैंने बोला अभी पहले, इसका आंसर क्या आएगा, हाउस ऑफ what is n minus half, so minus half plus 1 plus minus half, क्या आंसर आता है, पॉजिटिव हाफ, so it's 1 upon root 2 and house of 1 by 2। Am I correct? हाँ, I think I'm correct, yes I'm correct। हाउस ऑफ 1 by 2 मैंने पहले बोला था, इट्स रूट पाई, ये पता होना चाहिए, इट्स रूट पाई, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। और कुछ बाकी है क्या, नथिंग ना, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, जस्ट वेट लेट मी चेक, इज एनीथिंग मिसिंग, एक बार चेक कर लो। सो मैं भी एक बार चेक करता हूँ, just wait, just wait, just wait, just wait।
काफी मिस्टेक वैसी 2 raised to minus half and 2 raised to 1 ना 2 raised to minus half plus 1 minus half plus 1 ये पॉजिटिव हाफ होगा ना तो लिखो पॉजिटिव हाफ नॉट नेगेटिव पॉजिटिव हाफ होगा ना सॉरी कहाँ पे 2 raised to 1 and 2 raised to minus half ये पॉजिटिव हाफ होगा ना तो गलती से मैंने नेगेटिव लिखा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो कुछ बांधा ही यहाँ पे ऊपर दैट वाज मिस्टेक यहाँ पे तो यहाँ पे रखो what is your answer group 2 into group 5 we can combine both of them so जो मिस्टेक मेरे से हुआ सेम मिस्टेक आपको एग्जाम में हो सकता है ओके so now you know कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है okay so this is level of group 5 this is your final answer you can also go through this answer by shortcut method when shortcut पता है you can cross check the answer ठीक है चलो so second is clear now we'll go for the third one is a based on different method okay उसका भी एक फॉर्मूला है but we'll not use वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे that formula is useful for only shortcut तो जब शॉर्टकट यूज करेंगे तभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे okay चलो let's go for the next question Sure. Let's go for the third one. Before taking the third one, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, okay? But वो फॉर्मूला हम लोग सिर्फ शॉर्टकट पे यूज करेंगे, okay? Not in one. 0 to infinity x raised to a divided by a raised to x dx, and the answer is 1 upon log a plus 1 and house of a plus 1. यहाँ पे जो कुछ भी a होगा ना सेम उसका log में ले लो a plus 1 and square root of house of a plus 1. तो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट अगर आपने ये सॉल्व ये मेथड यूज किया डायरेक्ट तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा एंड यू विल नॉट गेट 4 मार्क आपको एक ही मार्क मिलेगा तो डायरेक्ट आंसर लिखा ना तो स्टेप आपको सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप ओके तो एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड ये मेथड सबसे इजी तो लेट्स सॉल्व इट चलो सो ये फॉर्मूला याद रखो यूज अ शॉर्टकट ओके शॉर्टकट से एक बार देखिए सो लेट्स टेक इट so let's take the first that is the third question of this one question is 0 to infinity x raised to m minus 1 divided by m minus 1 x dx तो इसको एक्चुअल गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर तो मतलब क्या है we need to assume something let ऐसे assume करना पड़ेगा so what we'll do we'll assume let m minus 1 raised to x is equal to e raised to because last time लगा log था ना log को मैंने t में कन्वर्ट किया था यहाँ पे e raised to form so convert it to e raised to तो नीचे जो कुछ पार्ट होगा उसको कन्वर्ट करना है e raised to t so we'll assume m minus 1 x is equal to et ये याद रखो मेथड so what will happen अगर मुझको ये log में कन्वर्ट करना है तो if I take log on both side तो क्या होगा so if I take log on both side तो log m minus 1 x and log e raised to t तो क्या होगा x जैसे log a raised to b कैसे लिख सकते हैं b log a ऐसे लिख सकते हैं ये b यहाँ पे शिफ्ट करता है से x log m minus 1 और यहाँ पे t आता है t log e ना log e और बेस कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर इज 1 यहाँ पे कुछ बेस स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर इज log e is equal to 1 ठीक है ये याद रखो so what is your answer sure let's wait so what is your answer x is equal to t divided by log m minus 1 log ये तो 1 हो गया now differentiate on both sides तो मैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करें dx dt ये तो कांस्टेंट है उसका कुछ हो नहीं सकता है माइनस ठीक है एंड उसके बाद लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना है सो लेट्स पुट द लिमिट
See, when x is 0, तो यहाँ पे x 0 put करो. So anything raised to 0 is 1. So when x is 0, anything raised to 0 is 1, and 0 is equal to e raised to t. और नहीं तो यहाँ पे substitute करो. Easy जाना है, यहाँ पे substitute करो. यहाँ. Best is this one. It's a linear form, ना? तो x 0 put के ये तो constant. x 0 मतलब क्या होगा? t भी 0. t also 0. Because यहाँ पे multiply होगा तो 0 होगा. When x is infinity, t is also infinity because it's a linear. तो अगर मुझे ये इक्वेशन फिर से लिखना है तो कैसे होगा? 0 to infinity. x is what? t log m minus 1. यहाँ पे क्या होगा? t log m minus 1 raised to क्या आएगा? m minus 1 raised to m minus 1. और नीचे m minus 1 raised to x क्या आएगा? It will become e raised to t. और यहाँ पे dx की जगह पे आएगा dt divided by log m minus 1. फिर से बताओ, ठीक है? कैसे आ गया? Let's see. देखो यहाँ पे x raised to m minus 1 है. What is x? t upon log m minus 1. तो यहाँ पे मैंने लिखा ना t log m minus 1 raised to m minus 1. तो यहाँ पे x raised to m minus 1. तो ये यहाँ पे this. उसके बाद what we require m minus 1 raised to x. तो ये raised to t raised to t. dx, what is it dx? dx is dt upon log m minus 1. तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, then solve it. So let's erase few part. तो practice क्या है? It will just take 5 minutes to solve this up. सिर्फ practice चाहिए बस. तो फिर से लिखता हूँ 0 to infinity t divided by log m minus 1 raised to minus 1 divided by e raised to t dt log m minus 1. ठीक, ये आ गया. इसको सॉल्व करें. चलो, so what we'll do? 0 to infinity e raised to t नीचे तो उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं. ये t raised to होगा n minus 1. उसके बाद ये 1 upon log n minus 1 raised to क्या है? n minus 1. उसके बाद dt log n minus 1. दोनों सेम है ना, like x raised to a plus x raised to b. तो ये x होगा, ये भी x है ना. m minus 1 यहाँ पे 1 है, power is 1. दोनों का एडिशन होगा. So m minus 1 plus 1 ऐसे होगा. The base is same. This base and this base is same. इसका पावर कितना? 1 दिया नहीं मतलब 1. So m minus 1 plus 1. तो ये minus 1 plus 1 get cancel. It will become only log m. इतना ही बाकी होगा. तो अगर फिर से मैंने क्वेश्चन लिखा तो 0 to infinity e raised to minus t raised to m minus 1 dt divided by log m minus 1 raised to, because ये minus 1 और ये plus 1 कैंसिल हो. ठीक, यहाँ तक आ गया. देख लो एक बार and then use the gamma function. because ये आ गया ना, e raised to minus t आ गया है. तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट अगेन और एक बार सेकंड सब्स्टिट्यूट नहीं करें. लास्ट मेथड में हमने और एक बार सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे नॉट रखा. चलो, so let's get the question once again. तो फिर से लिखता हूँ, कांस्टेंट भाग लिख देता हूँ. तो लिखूँ log n minus 1 raised to, okay, then 0 to infinity e raised to minus t raised to n minus 1 dt. Now by using gamma function you can solve it. So I can write by gamma function so what is the gamma function?
0 to infinity e raised to minus t raised to n dt is equal to हाउस ऑफ यहाँ पे भी सेम होगा, मैंने सेम यूज किया, तो ये तो पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे n प्लस वन, व्हाट इज n प्लस m माइनस वन, यहाँ पे n क्या है m माइनस वन, उसमें एक टर्म और ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या है हाउस ऑफ m माइनस वन प्लस वन, आंसर इज m हाउस ऑफ m only and divided by log m minus 1 raised to n, खत्म, this is the answer, correct, ठीक है, this is the answer, we'll use a shortcut method to get this answer, तो shortcut method में लिखेंगे कि सेम आंसर आने वाला है, ये कितने स्टेप में आ गया, 5 to 6 स्टेप में आ गया ना, वो तो 2 स्टेप में आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया, लेट्स गो फॉर द शॉर्टकट मेथड कि उससे भी सेम आता है। First, I'll write the fraction. Fraction क्या था? 0 to infinity x raised to m minus 1 divided by m minus 1 raised to x dx. ये fraction था। Formula क्या था? Formula था 0 to infinity x raised to a e raised to x dx is equal to 1 upon log a plus 1 house of a plus 1. देख लो यहाँ पे log किसका a का? What is a? A is m minus 1 because a raised to x ना, so m minus 1, और उसका a plus 1, मुझे a is m minus 1, उसमें अगर एक ऐड किया तो minus 1 गेट कैंसिल कर जाएगा, and a plus 1 मतलब n minus 1 plus 1, कितने स्टेप में आंसर है? एक स्टेप में, एक स्टेप के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा नहीं, so you should follow that substitution part, ठीक है, so शॉर्टकट से भी आंसर मैच हुआ, शॉर्टकट से आंसर मैच हुआ, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 मतलब ये टाइप का क्वेश्चन, इट्स एक्चुअल क्वेश्चन 4 लेकिन ये मेथड का क्वेश्चन 4। सो व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई थिंक इट्स अ 5 रेज़ टू समथिंग, जो भी सम है इट्स अनसॉल्व, तो मुझको में सॉल्व नहीं मिला उसका, तो यही लिखा -4x² dx चलेगा, ठीक है, मुझे डरो मत। सो व्हाट विल डू, जो टर्म दिया उसको एज्यूम करके, अभी कुछ भी नहीं, सो लेट 5 - 4x² इज इक्वल टू e raised to assume this part as e raised to -t, क्यों -t किया? सी लास्ट टर्म जो पार्ट था ना, दैट इज e raised to x था ना, ये पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया e raised to t एज अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव ऐसे करते हैं। सी यहाँ पे पॉजिटिव के भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब टू यू, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ऊपर नीचे हो। लास्ट टाइम क्या था, लॉग लास्ट टाइम क्वेश्चन 1 upon m minus 1 raised to x था, तो ये x पॉजिटिव था ना, इसमें भी पॉजिटिव raised to t, यहाँ पे नेगेटिव तो दैट्स मीन raised to minus t ऐसे, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नॉट एडजस्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं लेते, एडजस्ट। तो इफ आई टेक log on both side तो क्या होगा, log 5 minus 4x² यहाँ पे log e minus t, मैंने पहले बोला था log किससे था, ये -4x यहाँ पे है, -4x² log 5 minus t log e, log is 1, तो सारी दुनिया को पता है log is 1, तो क्या है -4x², ये माइनस और माइनस गेट कैंसिल, तो माइनस और माइनस को भी उड़ा देते हैं, so 4x² log 5 is equal to, so what is x²? x² is t divided by 4 log 5, so I want x, मुझे actually क्या होगा, square root of t, okay, square root on both sides कर दो, t का square root 4 का square root 2, और यहाँ पे log 5 raised to 1/2, और आपने अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिया तो भी चलेगा, you can also get square root of log 5, ठीक, अभी 2 and square root of log 5 ये तो कांस्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे तो dx है, स्क्वायर रूट ऑफ रूट t ये पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आता है, 1/2 रूट x,
1/2 गुड टेक्स, ठीक है, याद रखो। तो नहीं पता है तो एक बेसिक लेक्चर मैंने लिया है यूट्यूब पे, ये बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसे उसकी हेडिंग है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, को फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 का टी का इट्स 1/2 √t, नीचे 2 पहले से है, पाई dt है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल गेट dx इज इक्वल टू, चेंज द कलर, सो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा जूम आया होगा आपको, तो जूम ऐसे नाम लिखा होगा। सो dx इज इक्वल टू 1/4 1/4 गुड t गुड log 5 dt, ऐसे है, ठीक है। We will do the substitution, I'll do the substitution। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, 5 - 4x स्क्वायर, ये तो e - t एज इट इज खत्म हो गया, dx की जगह पे ये टर्म है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, और 0 to infinity एज इट होगा, ठीक है। 5 0 to infinity पता है, बिकॉज लीनियर फॉर्म, सो यहाँ पे देखो ये लीनियर फॉर्म है, तो x 0 होगा तो t भी 0 है, सो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो व्हेन x is 0 t is also 0, बिकॉज ये लीनियर है ना, x 0 to t भी 0, व्हेन x is infinity t is also infinity, तो कुछ वांधा नहीं है। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, 0 to infinity, पूरा टर्म तो e - t था, e - t, dx की जगह पे क्या आएगा, 1/4 गुड t स्क्वायर रूट ऑफ log 5 dt, खत्म। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अभी तो डायरेक्टली गामा फंक्शन आ गया, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं, देन वी राइट डायरेक्टली गामा फंक्शन। जीरो टू इन्फिनिटी t, ये कुछ काम करना, 4 log 5 कुछ काम करना, 4 रूट ऑफ log 5 ये कुछ काम करना, 0 to infinity t, 1/√t ना, 1/√t मतलब 1/t⁻², ऊपर गया तो t⁻², t⁻², and dt, ये तो गामा फंक्शन हो गया। So let's write down it's a gamma function. So by using gamma function, क्या gamma function, 0 to infinity e⁻t t⁻n dt is house of n plus 1, यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले नोटबुक में प्रॉपर लिखो, समझ के लो पहले, देन राइट डाउन होल सम इन नोटबुक प्रॉपरली, देन उससे एक बार फिर से पढ़ो। बीच में कुछ भी डाउट है तो 1 सेकंड गो थ्रू द वीडियो एट दैट पॉइंट, वहां पे पॉज करो, वहां से उसको स्टार्ट करो। तो ये फॉलो किया मैंने, तो ये 4 log 5, इसका आंसर क्या आएगा, इट्स n इज व्हाट, माइनस हाफ ना, द हाउस ऑफ माइनस हाफ प्लस 1, गलती से इसको स्क्वायर रूट में लिखो, इट्स अ हाउस, आई कॉल्ड इट एज हाउस, ठीक है। अगर मैंने इसको फिर से सॉल्व किया तो इट्स 4 of log 5, it's a positive half, that is root pi, root pi 4 root of log 5, am I correct कि बढ़ते हुए, I think I'm correct, exactly correct, खत्म, exact answer है, start, so this is your final answer, खत्म। तो फोर्थ सम में से we'll go for the last one, ठीक है। ये क्रॉस चेक भी करो शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, ये क्रॉस चेक भी करो। Let's go for the last one. Before starting the last one, we should know one formula. Okay? So last, मैंने बोला 3 मेथड है, तो this is last method. House of n is equal to house of n plus 1 divided by n. चेक करते हैं, देखो let's take, मुझे हाउस ऑफ 7 निकालना है, तो ये क्या बोलेगा, 7 plus 1 का हाउस निकाल, नीचे 7 डाल। लेट्स सी हाउस ऑफ 7 मतलब क्या, 6 फैक्टोरियल,
चेक करते आता है कि नहीं 6 फैक्टोरियल। 7 प्लस मतलब हाउस ऑफ 8 डिवाइड बाय 7। 8 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7। 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, लेट्स सी। 7 फैक्टोरियल 7 into 6 फैक्टोरियल, उसके आगे 6 into 5 into 4 into 3 into 6 फैक्टोरियल 7। 7 से 8 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला, इसको ये समझा नहीं छोड़ दो, जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला। क्या बोला, हाउस ऑफ n इज इक्वल टू इन द न्यूमरेटर हाउस ऑफ n plus 1 डिवाइड बाय n। दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फॉलो करना है डायरेक्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम। एक बार ये फॉर्मूला फिर से देख लो, दिस वन, ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम। फ्रैक्शन नंबर 5, दैट इज लास्ट फॉर द टुडेस। So क्या था क्वेश्चन था, there is one given कि हाउस ऑफ 3 by 5 is 1.4891 and then find this one is then find हाउस ऑफ -7 by 5, ये फाइंड आउट करें। ठीक है, लेट्स गो। Now we know that क्या कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये तो मुझे पता है हाउस ऑफ n इज इक्वल टू हाउस ऑफ n plus 1 divided by n. So what we'll do, let's assume here n is equal to -7 by 5, ये assume करते हैं। ठीक है, सो क्या आएगा, मुझे इसका हाउस करना, हाउस ऑफ -7 by 5 क्या आएगा, it will become the house of -7 by 5 plus 1 divided by -7 by 5। ठीक है, यहाँ तक तो पता चला, सिंपल है। -7 by 5 plus 1 कैलकुलेट करो एंड रेशियो निकालो। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो यू गेट द आंसर एज हाउस ऑफ -2/5 डिवाइड बाय -7/5। या दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये वैल्यू यूज करें। तो हाउस ऑफ -7/5 क्या है, हाउस ऑफ -2/5 -7/5। ठीक, इसको यूज करें। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं, कुछ नहीं, मैंने जस्ट फॉर्मूला यूज किया, इनिशियल फॉर्मूला। WKT क्या है, इट्स नॉट अ विकेट, इट्स वी नो दैट। ओके, आईपीएच वाले ने तो बोलेंगे विकेट है। सो हाउस ऑफ -7 by 5 इज इक्वल टू क्या है, -2 by 5 डिवाइड बाय -7 by 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स -5 by 7 एंड हाउस ऑफ -2 by 5। ठीक है, नाउ सेम फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अगेन एक बार यूज करें। -5 by 7 तो एज इट इज, तो ये हाउस यहाँ पे आएगा -2 by 5, यहाँ पे क्या है, -2 by 5 plus 1 डिवाइड बाय -2 by 5। समझा, मैंने एक बार यूज किया फॉर्मूला अगेन। चलो लेट्स सॉल्व इट। ये -2 by 5 ऊपर जाए तो क्या होगा, -5 by 7 into 5 by 2 -1 into इसका क्या आएगा, इट्स बिकम 3 by 5। नाउ उस 3 by 5, ये हाउस ऑफ 3 by 5, ये तो आंसर मुझे पता है। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बिकम 25 by 15। करेक्ट ना, 25 by 15। हाँ 25 by 15। उसके बाद ये हाउस का वैल्यू दिया उन्होंने, ये हाउस का वैल्यू कितना दिया, 1.4891। जस्ट कैलकुलेट करो, ये सॉल्व करो, यू गेट आंसर 2.6591। दिस वे फाइंड खत्म हो गया। दो बार फॉर्मूला यूज किया बस, हाउस ऑफ n इज इक्वल टू हाउस ऑफ n plus 1 डिवाइड बाय n, दो बार फॉर्मूला यूज किया, यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया, प्रीवियस इसमें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी यूज दैट फॉर्मूला ओनली टू फाइंड शॉर्टकट आंसर, क्रॉस चेक दिस। So tutorial finish over. We'll take tutorial 4 on tomorrow, tutorial 5 on day after tomorrow. Okay, so I think we'll stop here. We will meet once again on tomorrow. Okay, sure, let's stop here.